Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 7th of November. Through this video session, I'll be discussing the important news and editorial for the day. The coverage of the news will include from the Hindu and Indian Express. The entire session of the discussion is going to help all the aspirants who will be appearing for civil services examination, state public service commission examination, and even many other government examination that you'll be appearing for. So the entire session is fruitful for all category of student. Specifically for the aspirant of civil services, it is very important कि आप इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs के सवाल के प्रैक्टिस करें. वी हैव अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. And even at the end of the discussion, I'll be discussing two important questions that will help you in the prelims examination. So let's get started with the discussion. First, I'll give you the highlights of the news. Then we'll proceed further with the detailed analysis of each and every news. So first, we'll look into the part of the personal data breach, which is the आधार की कुछ data leak की गई है और इंडिया में अभी तक की सबसे बड़ी leak मानी जा रही है with regards to data. The second important news talks about the House panel that have adopted the criminal law bill, जो नई criminal law bill आई उसके adaptations को लेकर के बातें कही गई है. The third important news where the Finance Minister of India has said that we need to merge the G20 outcome, that is the New Delhi Declaration, with India's policy process. The second last, that is the Prime Minister of India and Iran President has made discussion with regards to the issues that is escalating in Israel and Palestine. And we'll conclude the session with editorial that talks about the net neutrality, क्या क्या threats रहे हैं net neutrality के और इसे किस तरह से counter करने की ज़रूरत है. Now let's get started with the detailed analysis of the news one by one. So the first news of the day is about the Aadhaar massive data leak. I think most of you must be aware of the fact in the recent time the news is ongoing कि जो इंडिया की डेटा है, I mean when it comes to the part of आधार डेटा, पासपोर्ट की डेटा है, वो लीक हुई है. एंड दिस वाज रिपोर्टेड बाय इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एजेंसी यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस है. रीसिक्योरिटी उन्होंने रिपोर्ट किया है दैट कुछ पर्सनल आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन विच कॉल इट PII, जो इंडिया में PII इंफॉर्मेशंस हैं, ऑलमोस्ट 800 मिलियन पीपल, राइट, 80 करोड़ जो इंडियन है उनके आधार और पासपोर्ट डिटेल्स को डार्क वेब में बेचा गया. दे हैव बीन समथिंग दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. और इसके जो थ्रेट एक्टर है, द नेम ऑफ दैट एक्टर इज PWN 0001. And the data sample, the data actual snapshot was also shared to authentify that yes, the data is breached. Still, government of India ने इसको लेकर के कोई clarification तो नहीं दी है, but they have seen that some mishappening has happened. Now CERT has taken into consideration. CERT इस पे काम कर रही है. Let's see what is the detail coming out of from this news. So nature of personal identifier informations की अगर बात करें, what is the PII, personal identifier informations की बात करें, it refers to any data that can be used to identify a specificity of an individual. चाहे वो आपके नाम हो, whether it is your name, it can be your name, it can be your address, right? Either your phone number, social security number, email address, passport number, biometric data, fingerprint and facial recognition, which is mostly taken in आधार. अगर बात करें इंडिया में आधार की, तो आधार में ये सारे डेटा एक जगह बायोमेट्रिक्स में रिपोजिटरी बनाए गए. Now PII, that is the person identifiable information, often is targeted by the cyber criminals to identify theft, fraud and malicious activities. Now गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअल कंफर्मेशन तो दी नहीं है, बट यूएस की जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे हैव कंफर्म दैट द डेटा इज लीक्ड आउट. नाउ गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्स है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has said that CERT is an important organization that stands for Computer Emergency Response Team. They are investigating the data leak and even the government still working on the part of moving massive amount of data, right? Now these data samples that were observed by the researcher obtained from the references of UIDAI और आधार कार्ड्स को लेकर के भी बातें कही गई. It is possibly that the threat might have taken place, but still we need to authentify, verify करने के बाद जो CERT की conclusions होंगी, उनकी जो reports होंगी,
that they will be submitting it with the Ministry of Electronic and Information Technology, then government can make the confirmation. If this is the case, almost 80 करोड़ इंडियन ऐसे हैं उनकी डेटा को लीक करने का चांसेस बढ़ा है. Now, threat that is arising from the leaked information, as I've told you, इसके reporting की है Resecurity. This is a US-based agency that said that India is rapidly growing economy. और इंडिया की रैंकिंग अगर बात करें ग्लोबल ऑर्डर पे, वी आर फोर्थ रैंक in terms of malware detections and first half of 2023 as per the survey which was conducted by the Resecurity. Now, कुछ और सर्वे की बात करें, 200 Indian IT decision have revealed that 45% of the business has experienced significant increase in the disruptions of the cyber attack last year. So the number is almost 45%. And additionally, 67% of government and essential services were organized similar to the part of disruption of the cyber attack. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट एक फुल प्रूफ, they need to have a foolproof data security in the country. Now this will be only ensured once we have an organization. As of now, CERT is a one organization which is taking care for the part of response team. Now, how can a user safeguard their personal data? Now, you as an individual, every one of us need to first take the foremost priority कि हम अपने data को सुरक्षित रखें. And how we can do? The user must be cautious about their email, unknown sources of the stolen information that can be used for the phishing attempts. Right now, there's other measures that is there. Changing the existing user ID, जो भी आपकी user ID है, उसके साथ साथ यूज़र आईडी के साथ साथ जो भी आपके पासवर्ड है वो एक फ्रीक्वेंट टाइम पे चेंज होने की ज़रूरत है. यू मस्ट हैव सीन फॉर द बैंक, इफ़ यू हैव 6 month ओल्ड पासवर्ड, कई ऐसे बैंक से और आपने लॉग इन नहीं किया है, दे आस्क यू टू चेंज देयर पासवर्ड इन अ रेगुलर इंटरवल. यूजर्स शुड ऑल्सो हैव अ 2-factor ऑथेंटिफिकेशन. 2-factor ऑथेंटिफिकेशन से क्या होती है, एक तो जिस सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं और दूसरा आप मोबाइल फ़ोन पे उसको वेरीफाई कर पाएंगे. This is called the 2-factor authentication, which is mostly there in Gmail और ऐसे कई ऐसे ब्राउजर्स हैं जहाँ पे आपको 2-factor authentications भी दी जाती हैं depending upon the security of that. Moving ahead with other news, House panel adopt reports on the new criminal law bill. Recently, government ने पास किया था 3 criminal law bill, one law bill which actually called for the amendment of the 3 part. तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विच इज़ द PSC, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHE की जो कमेटी है, दे हैव सेड दैट दे सीक्स टू रिप्लेस द कॉलोनियल एरा लॉ. और कुछ चेंजेस किए गए हैं बट द नेम ऑफ द हिंदी विल कंटिन्यू डिस्पाइट द डिसेंट नोट दैट वाज देयर फ्रॉम द अपोजिशन. क्यों डिसेंडिंग नोट थे? बिकॉज जिस तरह से हिंदी नॉमेनक्लेचर यूज़ की गई है वो आने वाले समय में और भी स्टूडेंट्स को या फिर फ्रेटर्निटी को प्रॉब्लम कर सकती है. दिस वाज सम ऑफ द ideas that was put in by the opposition, but the House panel has said that they will be looking and sticking to the Hindi name itself. Now, opposition shout more time. Actually, में जब scrutiny के लिए दी जाती है, the parliamentary standing committee were actually there. Now, they have said that the opposition leader want more time to scrutinize the part of the changes that was brought in the भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षर अधिनियम. राइट, तो ये सारे कुछ ऐसे चीज़ें थे. द अदर इज इंडियन पीनल कोड. दीज आर द इंग्लिश नेम विच वर एक्चुअली यूज्ड. इंडियन क्रिमिनल कोड जिसे CRPC कहते हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट है. राइट, इन सारी चीज़ों में चेंजेस की गई है. I'll show you an image that will help you to understand with the clarity that how does this work. So 3 bill was actually introduced. The first was Indian Penal Code जिसे भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 कहा गया. क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल 2022. राइट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं. इट विल हैव 356 सेक्शंस इन द IPC विच विल बी लाइक पहले 511 हुआ करती थी. नाउ CRPC में बात करें 533 जो पहले 478 हुआ करती थी. नाउ द पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इट इज 170. Now the problem is the name that has been changed has been a problem for the opposition. उन्होंने कहा था कि इस तरह के sudden changes में बहुत सारी problem आ सकती है. And even the law student have protested to the part of the bill that was there.
Now let's see, actually parliamentary standing committee ने इसे approve किया है, then finally there will be no doubt that government is going to adopt it. Now punishment for murder and mob lynching, जो मर्डर है और मॉब लिंचिंग हो रही है उसको लेकर के भी एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए. जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसमें रिकमेंड किया गया था दैट पैरिटी शुड बी देयर इन पनिशमेंट फॉर द मर्डर एंड मॉब लिंचिंग. मॉब लिंचिंग को लेकर के गवर्नमेंट ने काफ़ी बारी एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज रखा है एंड मॉब लिंचिंग इज समथिंग विच इज़ कंसर्निंग फॉर इंडिया. तो भारतीय न्याय संहिता जिसे BNS भी कहते हैं, दे हैव लेड डाउन मिनिमम 7 ईयर्स की मिनिमम पनिशमेंट रखी गई है और ज़्यादा केस में इम्प्रिजमेंट टू डेथ अगर किसी तरह से होती है तो उसके लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए भी प्रोविजंस है. Now this remove the disparity and the committee has suggested the minimum punishment clause should be removed for the mob lynching. So let's see, these changes will be whether appreciated or not, but government will be actually will be bringing some of the major changes in the upcoming bills. Now, the finance minister has called for integrating the G20 outcome in the policy making. India ने recently G20 summit held किया था and India continue to be the G20 member till this month, that is November 2023. तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली कहा है कि जो G20 में न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशंस हुई थी उसके जो आउटकम्स हैं उसके उसे हमें अपने पॉलिसी मेकिंग के साथ मर्ज करने की ज़रूरत है so that we can have a substantial progress in the overall policy making and the policy implementations. Macroeconomic perspectives पे अगर देखें, if you look at the G20 presidency, so there was some important finding that was there, important outcomes were also there in the part of New Delhi Leader Declaration, we'll call it NDLD, right? और इस डिक्लेरेशन में कुछ स्ट्रैटेजिक मैक्रो स्ट्रक्चर पॉलिसी सजेस्ट की गई थी and the recovery of the economy was expected at 3.8% globally भी. इंडिया की परफॉर्मेंस, अगर इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की बात करें, it was comparatively well. The ongoing crisis impacting the global growth and the future prospects. Now, policy coordination is something which is essentially required. खास करके अगर Ministry of Finance की बात करें, Ministry of Finance has categorically said that a better coordination is required and domestic और critical needs पे ज़रूरतें हैं कि सारी चीज़ों पे एक strong coordinations बने, sustainable balance हो और inclusive development में सारे organization मिलके काम करें. Now the New Delhi Leader Declarations which is there is something that will underscore the part of implementing the well-calibrated macroeconomic structures जो कि साथ साथ economic growth के साथ माइक्रो इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करेगी. So the main aim is to ensure at the macro level the economy is performing well and even it called for the financial stability, right? So these are the two topmost priority. Now India's G20 presidency has been a clear directions जहाँ पे important issues को already discuss की गई है and these were some of the important findings that is also there which call for more robust and holistic development globally. Moving ahead with other news, India and Iran discusses Israel-Hamas conflict. The situation in the part of the Palestine Gaza is worst. Prime Minister ने इसको concern में ध्यान रखते हुए talked to the Iranian president and he said that's a difficult situation coming out from West Asia और इसराइल और हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर डीप कंसर्न दिखाते प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि टेररिस्ट इंसिडेंसेस, वायलेंस और लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ इज़ रियली कंसर्निंग. और ख़ास करके बात करें अगर वहाँ पे गाज़ा रीजन की, फ़लस्तीन रीजन की, डेली ऑलमोस्ट 300 पीपल आर डाइंग, 300 लाइव्स आर एवरी डे. आई मीन दीज आर द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डेथ दैट इज़ रिपोर्टेड एवरी डे बिकॉज ऑफ द मिसाइल अटैक्स. Now, India ने क्या response दिया है? While looking at the situation, the volatile situation which is there, India's major stakeholder in the West Asia और deep stake है इंडिया की in terms of credibility and influence the situation जब से इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में वार हुई. Even if you call Hamas as a particular group, the things has not been performing well. The Prime Minister has reiterated the long-standing persistent positions of Israel and Palestine issue. And even Iran has also urged the BRICS members, जितने भी BRICS members हैं, that include Brazil, Russia, India, China and South Africa, कि वो intervene करें और उसके साथ साथ जो इजराइल रिजीम है वार क्राइम पे उसको रोके. जो गाजा स्ट्रिप में एक्चुअल कंडीशंस है दैट इज़ वर्स्ट
it in some course of days it will be complete ruin, right? ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और सिर्फ वहाँ पे मलबे बचेंगे. No, the Gaza Strip is, the situation is worst in the Gaza Strip region. नाउ इंडिया ने एक्चुअली abstain किया था रेजोल्यूशन से. आई मीन यूएन ने वीटो किया है इसको, बट इंडिया हैज abstained with the UN Security Assemblies, and the resolution has underscored with a part of militancy, and even it was not justified for the terror act. Resolution has protected for the civilian and upholding the humanitarian obligations, जहाँ पे overwhelming adopt की गई. 121 nation has actually voted in favor, 14 in against, और 44 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने abstain किया. इंडिया के अलावा जो और कंट्री ने abstain किया, दैट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन एंड यूनाइटेड किंगडम. सो एट जियोपॉलिटिकल लेवल, अगर जियोपॉलिटिकल लेवल पे बात करें, थिंग्स वर्क इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड इंडिया प्रिफर टू abstain from the voting. Now, moving ahead with the editorial for the day that specifically focuses upon attempt that threatened the net neutrality, OTT, और इम्पॉर्टेंट जो खास करके इंडिया में सर्वर्स हैं, राइट, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनके बीच किस तरह से नेट न्यूट्रलिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसकी डिस्कशन की गई है इस एडिटोरियल. So what I'll be looking, first we'll be looking at the flooded argument that is affecting the part of net neutrality. क्या argument है इसको लेकर के. नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, टेरई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके क्या गाइडलाइंस है, क्या रेगुलेशंस हैं, एंड द कंक्लूजन. So in July this year, Telecom Regulatory Authority of India, it's a powerful body that regulates the overall part of telecom sector in the country. उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था that a comprehensive consultation should be there over the top, खास करके जो OTT सर्विस हैं उनको लेकर के, because there was a conflict of interest that was coming. And for more than a decade, telecom companies have faced declining revenues from the traditional services and voice call. पहले वो एक्चुअल में ट्रेडिशनल सर्विसेज लेते थे, वॉइस कॉल होते थे, एसएमएस के थ्रू उनको पैसे मिलते थे. बट आफ्टर द पॉपुलैरिटी इन द ओटीटी, देयर अर्निंग हैज एक्चुअली बीन डिक्लाइनिंग. Now on the flip side, the OTT service has led to the surge in the data consumption. तो दूसरी तरफ डेटा कंजप्शन बढ़ी है, और डेटा कहाँ से आ रही है? डेटा इज कमिंग फ्रॉम द मोबाइल ऑपरेटर. So these are the points that you need to understand. तो जो मोबाइल ऑपरेटर है, अल्टीमेटली व्हाट यूजर इज डूइंग, दे आर पेइंग द मोबाइल ऑपरेटर. अल्टीमेटली जो पेयर है वो मोबाइल ऑपरेटर है. इसी वजह से मोबाइल ऑपरेटर के साथ साथ आपको किसी भी पर्टिकुलर OTT के भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करना होता है, ताकि उनको भी थोड़ी प्रॉफिट हो. बट नेट न्यूट्रलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी होती है. Now, floated argument that is there with the part of net neutrality, क्या argument दी गई है? जो OTT है, that has led to the increased demand from the telecom companies. कुछ important content providers की बात करें, like Netflix, Amazon specifically Amazon Prime, Disney Plus Hotstar, they have a cost of bandwidth because इनके अपने subscriptions होते हैं. The subscriptions are there, even for the membership fees are there. Now, telecom companies argued that streamlining the platform are free riders benefiting with their infrastructure, क्योंकि वो उनके infrastructure data use कर रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ benefits मिलने चाहिए. However, this argument is flooded and threatened needed the net neutrality principle. Now, I'll make you understand कि net neutrality principle है क्या. By definition इसे क्या कहते हैं? Actually ये concept 2016 में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा limelight पे रही, 16 और 17 में. तो net neutrality एक ऐसी principle है जहाँ पे internet service provider must treat all data on internet as a same, at the same way with same parity, और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं की जाएगी बेस्ड ऑन द यूजर कंटेंट, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशंस एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. So there should be transparency, there should be parity among all the data that is distributed. Now, net neutrality aims to maintain a level playing field, जहाँ पे internet, it will allow the user to have access to online services without restrictions by the ISP, that is the internet service providers, right? Now, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टेरई की बात करें, उन्होंने भी रेगुलेशंस जारी की हैं विद रिगार्ड्स टू द नेट न्यूट्रलिटी. उन्होंने प्रोविजंस किया था discriminations of tariff. This was there in 2016 when TERAI has actually come up with a guideline, and it says कि एक्शन लेने की ज़रूरत है. उन्होंने एक्शंस भी लिया. जो फेसबुक की फ्री बेसिक्स प्लेटफॉर्म थी, उन पे एक्शन लिया, एंड फाइनली इट वाज बैंडेड. Later on, TERAI has released the comprehensive recommendations that the large guided adaptations principle in India must be taken into considerations.
Now these steps were taken by Terai, were not noted elsewhere in the world. ये अपने आप में एक यूनिक थी, बिकॉज और किसी भी वर्ल्ड ने इस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया था. Now to conclude the part, अगर देखें आज के present context में, even if you look at the OTT, I mean the over the top platform which is there, along with the telecom operators, it is very important that all stakeholders, including the policymakers, understanding the term of consequences and short-sighted demand should also be there with the telecom companies. People are actually using the platform, the infrastructure part of the telecom, और जो actual aggregators हैं, that is the OTT, right? Upholding the principle of net neutrality is essence to foster the conductive environment, चाहे वो innovations हो, competitions हो, consumer welfare हो, especially in India, these things need to be taken into consideration. तो एक बार फिर से नेट न्यूट्रलिटी की बात हुई है, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप इस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें, इसके जो फोल्डर पॉइंट्स है वो नोट करें, और आपसे मेंस एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली आई एक्सपेक्ट कि मेंस में आपसे सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं. Now moving ahead with the MCQ questions of the day, before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first, the correct option is A, that is about the dengue. Dengue is transmitted through the female Aedes mosquito. So first statement is incorrect. The second statement is also incorrect, that it cannot breed in a temperature fall below 16 degree. Only the statement 3 is correct, that IgM, immunoglobulin M and IgG as antibody test which detects the part of जितने भी एंटीबॉडीज हैं किस तरह से एंटीजन है या क्या फंक्शनिंग है वो इस टेस्ट से डिटेक्ट की जाती है. फॉर सेकेंड क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज बी. मैंने आपसे कुशा के बारे में पूछा था, तो उसके जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, दैट द लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इस प्रोजेक्ट कुशा विल डिप्लॉय विद द शेड्यूल ऑफ 2028-29 and the Defense Research Development Organization will create an ambition project with a budget of 217 crore. So these are the explanation and detailed answers. Today's MCQ questions of the day. The first question, that is with regards to H. pylori, the virus that affects the nervous system of the human. The frequency affects the person when he is a child, and the treated with the antibiotics cocktail and the proton pumps inhibitors. So आप पार्टिसिपेट करें. मोस्ट ऑफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें. क्वेश्चन आंसर के ऑप्शंस यहाँ पे ज़रूर बताएं. हाउ यू कैन पार्टिसिपेट, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद आप अपने ऑप्शंस जो आपको करेक्ट लगे, जो करेक्ट हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. दोज एस्पिरेंट विल बी कमेंटिंग, आई विल बी हाईलाइटिंग देयर कमेंट इन द डिस्कशन. The second question of the day is about the Vitimer plastic. Subject to higher temperature, it can molded in several times. It is a biodegradable plastics. Again आपको सेम क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके अपने जो भी ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. This was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, queries about test series, programs, admissions, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.